Friends, how are you? Today we will learn Unit 2 Wheat and Humor, Animals, Birds and Dr. Dolittle. आम यूनिट 1 ले क्वेश्चन आंसर सब देखिले वर्तमान आम यूनिट 2 को जीवा एनिमल्स बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटल देख प्रथम स्टार्ट करबा पूर्व वी विल लर्न लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड डू यू हैव ए पेट और डोमेस्टिक एनिमल तुम पाखे कहीं डोमेस्टिक एनिमल पेट एनिमल अच्छी कि इफ येस व्हाई इफ नॉट व्हाई नॉट जब तुम पाखे अच्छी कहीं अच्छी लिख तुम जदि ना कौन पाई ना लिख हाउ डू पीपुल यूजुअली स्पेंड टाइम विथ ए पेट और डोमेस्टिक एनिमल शेयर योर थॉट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर आस तार बर्तमान तो आंसर देखा कौन लिखा देख इफ येस व्हाई जदि येस येस आई हैव ए पेट जो मान पेट थी से उपरटा कर इफ येस आई हैव ए पेट आई हैव ए डॉग आई कीप इट बिकॉज pets are friendly, playful and affectionate. They cheer me up and keep me company and I am when I am alone. Looking after देखो ये जो look after टा को गोटे फ्रेजाल भल कह जाए जोटा ता माने होची look after माने जत्न नेबा हैला a pet also teaches us responsibility. He fed it I fed it, take it for walks and make sure it is healthy. तो देख जदि तुम पाखर पेट ना इफ नॉट व्हाई नॉट कौन पाई ना इफ समवन डज नॉट हैव ए पेट इट मे बी बिकज ऑफ लिमिटेड स्पेस माने रखा पेट ताखर जगह न और बिजी शेड्यूल थी तो से टाइम पेट को टाइम दे पार न और हेल्थ रिजन सच एज एलर्जी जन जन थाए माने एनिमल संस्पर्श आसिले से एलर्जी हो पारे आ कौन पीपुल कैन स्टिल एंजॉय एनिमल्स बाय विजिटिंग फार्म्स आ किसी लोग अच्छा कहले कहीं आम घर आने पेट मान रखा आम जीवु एनिमल को नंदनकानन जीवु कि आम कौन चिड़ियाखाना जीवु आराम से देखे देखिए आसबू फार्म्स हेल्पिंग फ्रेंड्स विथ देयर पेट्स एंड केयरिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम माने जब फ्रेंड्स मान घर गले किसी समय पेट मान सहित अतिबाहित करदे पलि आसिले से घरे पेट रखती ना फास्ट क्वेश्चन टी आशा करे तुम्हें मैंने भल भाव बुझीपार देन जीवा तार सेकेंड क्वेश्चन को सेकेंड क्वेश्चन आसूची व्हाई डू पीपुल यूजुअली स्पेंड टाइम विथ ए पेट और डोमेस्टिक एनिमल पीपुल किपरि भाव से माने पेट बा डोमेस्टिक एनिमल पाख टाइम स्पेंड करती पीपुल स्पेंड टाइम विथ पेट्स इन मेनी वेज दे प्ले गेम्स लाइक टेक फॉर वॉक्स ग्लूम देम फेड देम एंड टेक देम टू दी वेट व्हेन नीडेड स्पेंडिंग टाइम विथ पेट्स बिंगिंग जदि आम पेट पाखे आम पेट मान सहित खेलवा रास्ता को चलने को जीवा सज करवा खावा देवा कि आम कौन करवा कहल सहित स्पेंडिंग टाइम विथ पेट्स ब्रिंगिंग जॉय रिड्यूस लोनलीनेस एंड हेल्प्स बिल्ड पेशेंस एंड केयर स्पेंडिंग टाइम सहित बहुत बार टाइम स्पेंड करवा सहित खेलवा माने तुम कौन कहल जो लोनलीनेसटा थाए तुम मोबाइल टिप कौन कर से टाइमटा सहित तुम स्पेंड कर जी क्वेश्चन नंबर 2 को आम क्वेश्चन नंबर 2 आसो यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक तुम स्टोरी पढ़ी थो जो गोटे एनिमल और बर्ड कथा कहते इफ यू हैड ए चांस टू कम्युनिकेट विथ एन एनिमल और बर्ड you would like to speak to and why share your thoughts with your classmates and the teacher. I would like to talk to a parrot को एनिमल यदि तुमको कौन से चांस मिले को एनिमल सहित कथा हाँपाई तेरे तुम्हें क्या चूज कर I would like to talk to a parrot because it can mimic words and I would learn what it notice in its surrounding. देख जो पैरोट्स देखो तुम घर जार पैरोट्स थी पैट्स बर्ड भाव रखि से कौन करेंगे कहल तुम जेकोसी वर्ड गोटे कह पैरोट्स से वर्डटा को से कौन कर तुम मिमिक्री कर तुम रिपीट कर है कौन आई वुड लाइक टू स्पीक टू ए डग आउ सहित से कथा तुम जोटा चूज तुम से दीटा एमती क्वेश्चन आंसर लिखा किसी दरकार ना आई तो तुम फार्स्टा लिखिपर ना सेकेंडटा भी लिखिपर आई वुड लाइक टू स्पीक टू ए डग कौन पर डग सहित कथा चाहते टू नो व्हाट इट फील्स व्हेन इट इज हैप्पी और अफ्रेड एंड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज सेंस बिफोर एंड प्लेस तो क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा
If you closely observe the body language of animals and birds, you can understand why they want to tell us. Work in pairs and study the pictures given below. Find out what emotions these animals and birds are trying to convey. Share your observation with your classmate and the teacher. Maximum time रे तुम देखिबो कोनोसी एनिमल को तांकर बॉडी लैंग्वेज देखि तुम जानि परिबो से कोन कहूची हैला। देखो ये बर्तमान किसी पिक्चर आम साइज देछि हम पिक्चर से अनुसार ताको लिखिबा। देखो प्रथम डग अच्छी डग पिक्चर 1 ले अच्छे सेटा हम कोन करता इमोशन ता कोन देछि एंग्री और अपसेट। देखो एंग्री अपसेट देखा जाउछि आ कोन ता बॉडी लैंग्वेज विंग्स स्प्रेड तार जो डेना गुड़ाक दी स्प्रेड होती आउ हेड हेल्ड लो टिके तलू ता हेड आसी एंड आईज फोकस आखि गोटे जगह से फोकस करुच्ची सीटा हम कौन कौ इमोशन को फोकस करुच्ची एंग्री और अपसेट को। देखो आम ऑब्जर्वेशन कौन कले ना डग लुक्स एंग्री एंड इट इज ट्राइंग टू अपियर लार्जर टू वन अदर्स। तापर कैट पाखु जीवा इमोशन स्केयर्ड और फ्रस्ट्रेटेड भयभीत होला पुना देखा जाउछि। देखो कैटटा देखो बॉडी लैंग्वेज आर्क्ड बैक वाइड आईज रेज्ड एंड फोएड टेल इयर्स बैकवर्ड्स। देखो तापर ऑब्जर्वेशन कौन कल द कैट लुक्स फ्राइटेंड एंड रेडी टू डिफेंड इटसेल्फ इफ नेसेसरी। द पिक्चर थी जे डग टी अच्छी डग टी देखो केमती देखा डगटा हैप्पी एंड प्लेफुल। बॉडी लैंग्वेज कौन है देछि रिलैक्स्ड माउथ विथ टंग आउट टेल हेल्ड हाई इयर्स अलर्ट और फॉरवर्ड। ऑब्जर्वेशन कौन द डग लुक्स चीयरफुल एंड रेडी टू प्ले और ग्रीट समवन कुकटो। पिक्चर 4 जो कक्टू देछि तार इमोशन है क्यूरियस और अलर्ट। देखो अलर्ट पिक्चरटा देछि तार बॉडी लैंग्वेज क्रिस्ट साइलेंटली स्टैंडिंग टॉल एंड 1 foot off। ऑब्जर्वेशन है द बर्ड लुक्स क्यूरियस इज पेइंग अटेंशन टू समथिंग नियरबाय। दिस बॉडी लैंग्वेज साइंस हेल्प अस गेस हाउ एनिमल्स आर फीलिंग। ये बॉडी लैंग्वेज जानी पारे जो एनिमल टा कौन फील करछि। वाचिंग पोस्चर आईज टेल विंग्स एंड साउंड्स गिव यूजफुल क्लू टू एन एनिमल्स मोड। तो एनिमल मोड टा कौन अच्छे हम जानी परिबा। देख लेट अस रीड तुम ए विषयटा डॉक्टर डुलिटिल पढ़ी भल भाव बुझी जाइथिबो। डुलिटिल गोटे जने डॉक्टर थिले पाखु जने कैट्स फूडमैन आसीथिले से स्टोमक देखा किंतु से कैट्स फूडमैन जनक एडवाइस देथिले कि से एनिमल पेट्स हवाई। स्टोरीटा तो आराम से पढ़ी तुम आराम से सब बुझी पारिथिबो। देखो आम बर्तमान तार क्वेश्चन आंसर करवा। लेट अस डिस्कस देला सिलेक्ट द आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द कैट्स मोडमैन suggest that Dr. Dolittle should become an animal doctor because he believes that Dolittle से कौन बिलीव करथले जे से कौन पे ताको एडवाइस देले जे Dolittle निहाती गोटे एनिमल डॉक्टर हवा से जो देखुଛନ୍ତି मेन लोक मानु जो देखुଛନ୍ତି तांको छाड़ी के पर्सन को छाड़ी के गोटे एनिमल को देखिबा पई तांको सजेशन देथिले कोन पई ना तार आंसर आसीबो। फर्स्ट हम ऑप्शन पढ़ा आंस लेस फी बाय ट्रीटिंग ह्यूमन पेशेंट्स एंजॉय द कंपनी ऑफ एनिमल्स एंजॉय द स्पीक लेस डिसलाइक स्पेंडिंग टाइम विथ ह्यूमन पेशेंट्स नोइंग मोर अबाउट एनिमल्स देन द लोकल भेटेरियंस। देख भेटेरियंस को ठारू ये अधिक भल जानी तेणु यार आंसर आसो ऑप्शन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुइटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। देखो Dr. Dolittle reacts to Polynesia's information about animal language with both excitement and
क्यूरियोसिटी है आंसर कौन आस बहुत क्यूरियोसिटी जाइए जानवा हि रसेस टू राइट संगे संगे दौड़ी गले लिखापी द बार्ड वर्ड्स सी प्रोवाइड्स एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न मोर do you think Dolittle would be famous as an animal doctor? If yes, why? If not, why not? तुम भावुच कि से जन एनिमल डॉक्टर होई से फेमस हो पारे जदि हाँ तेरे कहीं तेरे जब नो हाँ तेरे कहीं नुह है देखो yes Dr. Dolittle would become famous as an animal doctor because she could understand and speak to animals, a skill no other doctor had. As birds and animals told others about his success, more creatures and their owners would come to him for help, and his reputation would spread beyond his town. पार्ट 1 गला बर्तमान आम आसवा पार्ट 2 को Part 2 let us discuss the first question आसिबो what became an common sight to Poorvi after Dr. Dolittle started treating animals कौन हला यार आंसर आसिबो farm animals learning bird language What did Dr. Dolittle do when lot of animals come to see him? ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏନିମାଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଡୋଲିଟିଲ୍ କ'ଣ କଲେ ଆସ ଦେଖିବା ତା ଆନ୍ସରଟି देखो तार आंसर आसब डॉक्टर डोलिटिल वुड डेफिनेटली फेस मेनी चैलेंजेस बहुत चैलेंजेस से फेस कर इफ मोर एनिमल्स कम टू हिम पाख बहुत प्रकार एनिमल आसवे जहाँ भी को ट्रबल हम फास्ट ही मे हैव टू स्पेंड मोर टाइम चेकिंग इच एनिमल किसी टाइम से फास्ट देवे एनिमल मान को चेक करेंगे ही हैज टू लर्न मेनी मोर लैंग्वेज टू क्योर द पेशेंट पाखर से जो लैंग्वेज शिखे क्योर करने भल करने ही मे ऑल्सो फेस स्पेस प्रॉब्लम्स फॉर देयर ट्रीटमेंट आउ से ट्रीटमेंट को करने से किसी स्पेस पाइबे देन आम जा क्वेश्चन नंबर 3 arrange the following events in correct order according to the story 3 have been done for you share your answers with your classmate and the teacher देख बर्तमान से आमको 10टी सेंटेंस लिखिदे से भितर से आमको कौन कर आई डबल आई ये 10 एमती लिखिदे है 1 2 3 लिखिदे आउ जी बक्स रहा कौटा 1 कौटा 2 हम से बर्तमान लिखा हाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो आसब ट्रिपल आई तापर 2टा आसब आई एक्स 4 आसब आई भि 5 आसब भि ये आगे लिखिदियो तापर मैं नेक्स्ट को जी ये तुम सिक्वेन्स बही पढ़ी लिख है देख 5 आसला भि 7 आसब भि आई 8 आसब भि डबल आई 10 आसब भि ट्रिपल आई जोटा 8 कहब है given below and answer the questions that follow. If I say only once a cracker, you understand me. But hear this cacaoi, fifi, good God gracious, cried the doctor. What does that mean? That means is the porridge hot yet in bad language. My son, you do not say so, said the doctor.
You never talked that way to me before. What would have been the good? Said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. You could not have understood if I had. Complete the sentence by choosing the correct option in the line. Good gracious, cried the doctor. The expression good gracious can be replaced by bravo, घोष, आल्हाज न हो रहे. यार आंसर आसिबो क्वेश्चन नंबर बी, घोष. Why did Polynesian ever used bad language with the doctor earlier? देखो, why did Polynesian ever used bad language? देखो, because she knew the doctor would not understand her. Speaking bad language before would have been of no use. Polynesia says, you would not have understood me if I had, which makes clear she did not use bad language earlier because Dolittle could not understand it then. Whether the following statement is true or false. Polynesia had been enjoying a food item while talking to Dr. Dolittle. It is true. The next question is, how did Dr. Dolittle feel according to the extract? Extract अनुसार Dr. Dolittle किपरि feel करथुले? Surprised. The answer आसीबो surprised. तापर एक्सट्रैक्ट पढ़िबो. क्वेश्चन देला, चूज ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द रिलेशन टा कंप्लीट करिया पे के वर्ड आसीबो. डिगिंग फ्लावर बेड, डैश फील्ड, प्लाविंग, PLOUGHING, प्लाविंग फील्ड. Next, choose the correct word to complete the sentence. Dr. Dolittle's attitude in the extract is understanding. Dr. Dolittle attitude केमती थिला? Understanding. से सब पशु पक्षी मान कथा को बुझी पारुथिला. Complete the sentence with an appropriate reason based on the extract. We can conclude that doctors take animals for granted. Take for granted because तमाने कोन आसीबो आसो लिखिबा. देखो त आंसर आसीबो. They think animals do not complain or express pain like humans do. Human माने जिमती complain करि पारंती तांकर पेन को एक्सप्रेस करि पारंती, एनिमल सिमती करि पारंती नाही बोली तांको एनिमल डॉक्टर्स माने टेक फॉर ग्रांटेड भाबो नै जानती. तापर देला क्वेश्चन नंबर ही आसीबो. Do you agree with the concluding sentence of the extracts? Why or why not? Yes, I agree. Treating animals is harder because they cannot tell us in the words what hurts. देखो एनिमल मानन को ट्रीट करिबा, से मानकर चिकित्सा करिबा, से मानन को मेडिसिन लिखिबा बहुत कष्टकर उपाय. कोन पई ना दे कैनॉट टेल अस इन वर्ड्स दैट हर्ट्स. से मान को को जगार पेन होउची कि तंग हर्ट कला से मान किछ कहि पारंती नाही. ए गुड एनिमल डॉक्टर मस्ट वॉच बिहेवियर क्लोजली. जे गुड एनिमल डॉक्टर हेतिबो से ताको एनिमल बिहेवियर को क्लोजली देखिबो. बी पेशेंस एंड understand different animals needs. These skills make animal treatment demanding and special. देखो यही स्किल गुड़ा जहाँ पाखर थी सी से एनिमल डॉक्टरटा स्पेशल हो पार. तापर क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा. आंसर द फॉलोइंग. हाउ कैन वी से दैट Polynesia was a good trainer of animal language. देखो Polynesia जो थिला से जो पक्षीटा थिला, Polynesia किपरि गोटे गुड ट्रेनर, गोटे भल तालीम प्राप्त भाव में किपरि परिचित है. देख कारण देख तार आंसर कौन आसीबो. Polynesia was a good trainer. बुझेला क्वेश्चन आंसर आसिला. एटू लिखिबो क्वेश्चन मान कि Polynesia was a good trainer. कौन पई? Because she already knew many animal language. से बहुत प्रकार एनिमल लैंग्वेज जानिथिला. And she taught Dr. Dolittle how to speak and understand them. आउ से Dr. Dolittle को सिखेला how to speak and understand them. Her clear and patient teaching helped Dr. Dolittle learn quickly and began to treat animals properly. देखो से सीना स्पष्ट भाव में जदि एनिमल डॉक्टर डोलिटिल को जदि से कहि न थांता, एनिमल डॉक्टर किछि बुझी पारि न थांता, कि सिखि पारि न थांता, सेथि पई आमे पॉलिनेशिया को गोटे गुड ट्रेनर भाव में कहि परिबा. तपर क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा. एक्सप्लेन how Dr. Dolittle gave equal individual attention to each animal who came to him for treatment. जे ता पई ट्रीटमेंट पई आसुथला, देखो से इक्वल केमितो ट्रीट करथला देखिबो. देखो डॉक्टर डोलिटिल प्रोवाइडेड स्पेशल अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट एनिमल. डिफरेंट अरेंजमेंट करथिला डिफरेंट एनिमल पई. सी मेड सेपरेट डोर्स टू नेल्स टू ईच टाइप कुड एंटर इजीली. ही लिसनड टू एवरी एनिमल, ट्रीटेड देम जेंटली एंड डिड नॉट इग्नोर स्मॉल क्रिएचर्स लाइक माइस. दिस एक्शंस शो ही गेव ईच एनिमल इंडिविजुअल केयर रिगार्डनेस ऑफ हिज साइज. देखो जहार साइज से छोट मुसाटे हो कि बड़ जिराफ हो, जहार साइज जा होना कहीं से प्रत्येक एनिमल को स्वतंत्र स्पेशल भाव से ट्रीट करथले हैला.
तापर क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा हाउ डज डॉक्टर डुलेटिल्स readiness to follow the parrot's advice highlight the importance of listening to different viewpoints। देखो डॉक्टर डुलेटिल listened carefully to Polynesia even though she was a parrot। देखो डॉक्टर डुलेटिल जने जने बड़ डॉक्टर थी से पॉलिनेसिया छोट जीवर कथा को से शुणिला बोली एत बड़ डॉक्टर से पाइला कारण से गोटे जन गोटे पेरुट थी कि पॉलिनेसिया पेरुट थी पॉलिनेसिया गोटे पेरुट थे से कथा सब शुणी बाय एक्सेप्टिंग हर सजेशन एंड लर्निंग फ्रॉम हर ही गेन्ड ए न्यू स्किल अंडरस्टैंडिंग एनिमल्स दिस शोज दैट लिसनिंग टू अदर्स व्हाट एवर देयर बैकग्राउंड कैन ब्रिंग यूजफुल आइडियाज एंड इंपोर्टेंट चेंज। देखो से जहाँ ता बैकग्राउंड हो ना कहीं से छोट जीवटे हो बड़ जीवटे हो भल लोकटे हो खराब लोकटे हो जदि आमर किसी सजेसन ताको मन देखिए आम शुणा तेज आम कि नुआ स्किल शिखिपर। क्वेश्चन नंबर 4 आसिबो व्हिच क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर डुलेटिल मेक हिम फेमस एमंग द एनिमल्स एक्सप्लेन द एविडेंस फ्रॉम द टेस्ट। देखो द क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर दैट मेड हिम फेमस कौन कौन क्वालिटी थिला से कम्युनिकेशन भल करि परथिला केया नोथिला और तार ऑर्गेनाइजेशन टाको से सब मिस्टिक पे स्पेशल करथिला। देखो कम्युनिकेशन ही लर्न एनिमल लैंग्वेज एंड कुड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स केयर ही प्रेस्क्राइब्ड ग्लासेस फॉर ए हॉर्स सॉल्विंग द इट्स आईसाइट्स प्रॉब्लम organization he made special doors for different animals and making treatment convenient। These qualities helped animals trust him and led to his growing fame। What changes do you think would happen in the world if people suddenly gain the ability like Dr. Dolittle to understand and communicate with animals? देखो people would likely treat animals more kindly because they could understand animals needs and pain। जदि लोक मैंने एनिमल मानकर पेन को ठीक भाव बुझीपारते तेज से कौन करते ठीक भाव ट्रीट करते। भेट्स एंड केयर्स वुड बी बेटर एबल टू डायग्नोस प्रॉब्लम एनिमल माइट लिव हेल्दियर सेफर लाइफ्स एंड पीपल वुड लर्न मोर अबाउट नेचर एंड हाउ टू प्रोटेक्ट देम। लोक मैंने एनिमल्स मैंने कौन करेंगे सेठू से जदि लोक मैंने से भाषा बुझीपारे एनिमल मैंने सेफ रे हेल्दी रे एवं लोक से कौन क्षति करें ना। तब जीवा नेक्स्ट कंपाउंड वर्ड देला कंपाउंड वर्ड आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच टू क्रिएट ए न्यू वर्ड। देखो ये सब देइछि कंपाउंड वर्ड को तीन भाग विभक्त करा हैछि गोटे हैला हाइपोनेटेड वर्ड्स ओपन कंपाउंड वर्ड्स क्लोज कंपाउंड वर्ड्स ला कोडा को वर्ड हबा आसे देखिबा। देखो जोटी हाइपेन चिन्ह देछि देयर वेल बियर्ड ओपन कंपाउंड वर्ड कोडा कसला सेलर सॉन्ग प्लाउ हॉर्स हार्वेस्ट माइस। क्लोज कंपाउंड कोड आसला जोटा स्पेस दिया नथिबो टी टाइम विंडो सिल एगुड़ाक आसब क्लोज कंपाउंड वर्ड। देख ये तुम लिखा है जोटा हाइपेन रहा है हाइपेनेटेड कंपाउंड वर्ड जोटा स्पेस रहा है ओपन जोटा स्पेस रहा है हूँ क्लोज्ड। तापर क्लियर कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बिलो। देख ये किसी ए बी देछि ऑप्शन ले आम से जॉइन करवा। देख फन लविंग हाई फ्लाइंग नेभर एंडिंग अर्ली राइजर्स सॉन्ग बार्स ओभर हेड ट्री ड्रॉप्स ताकू नहीं कि बर्तमान आम यहाँ ब्लैंक्स देखा। Complete the paragraph with suitable compound words from the table. An example has been given for you. After being treated by Dr. Dolittle, a fun-loving dolphin danced playfully in his sanctuary. The songbirds chatter of monkeys and chose through the tree tops. Their aliens cured. DSCO, high-flying eagles soared gracefully. Their health restored. Early rising birds among the branches chirped and joyfully from the trees. All creatures were happy with Dr. Dolittle's care. Now underline the animals that are hidden in the given below. देखो goat GUAT goat TANT ant तापर author C हम horse देखो ये माइस आसीबो अंडरलाइन जो देछि ताको नेकी आउट नुआ वर्ड करिवो the patients who came late camel. Read the following sentence from the text. Study the highlighted words. एवढं किछि नै ओके सो एबे बुझिबा द वर्ड फ्रेज एंड सीक्वेंस दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इज ए पेनिंड्रोम. आमे वर्तमान बुझिबा पेनिंड्रोम कोटा. पेनिंड्रोम होचे तुम राइट रु पढिबो जहा लेफ्ट रु पढिबो से आसीबो. धरो म कहबे मैडम MADAM राइट पढिबो MADAM मैडम फोन तक लेफ्ट साइड रु पढिबो MADAM मैडम सेम रहिला. धरो लेबल LEVEL फोन तक ए साइड रु पढलो लेबल फोन एपट साइड पढो LEVEL लेबल पूरा सेम रहिला. तेनु एटा को आमे कहिबा पेनिंड्रोम.
ଆସ read the sentence below and identify the palindrome words and sentence. Step on no pets. The full sentence is palindrome. ହେଲା ନମନ saw a race car at the show. ଏ ଯେଉଁ race car ଆସିଲା ଦେଖ race car ସେଟା ଗୋଟେ palindrome ହେଲା କାରଣ ସେମ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ନିତିନ ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍ ମାଲୟାଲମ ସେଟା palindrome ନାମ ନିତିନ ନିତିନଟା ଏପଟେ ପଢ଼ିବ ଯେଉଁ ନାମ ଆସିବ ସେପଟେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଆସିବ ମାଲୟାଲମ ସେ ବି ଆସିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ୟୁଜ୍ ଏ ରୋଟେଟର ଟୁ ଚେକ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଲେବୁଲ ରୋଟେଟର ଗୋଟେ palindrome ୱାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲ ଗୋଟେ palindrome ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖ ଏନ୍ସାର ଲେଖା ହେଇଛି ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଦ ପାଇଲଟ derailed on the radar to navigate safely. Radar should be palindrome word. Iva can I see bees in a cave? The whole sentence is a palindrome if we ignore space and punctuation. तब now create your own palindrome and share it your palindrome. देखो ये वर्ड उड़ा मिले जो लेबल नोन radar civic pop wow did dad refer एगुड़ा सब palindrome word. palindrome sentence कोड़ा आसिबो madam in I didn't I am Adam Santa to at NASA एगुड़ा sentence उड़ा को लिखा है do is she good never order even no lemon no melon तब देला एगुड़ा palindrome word बुझी पाइलो palindrome word বা palindrome sentence. Underline the verbs and identify the tense form given following the test. देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज पर वर्ब आईएनजी अछि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ओनली गुटे वर्ब अछि सेटा प्रेजेंट सिंपल ले अछि एम पर आईएनजी अछि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एठी इज अछि एठी थिंग्स अछि एटा प्रेजेंट सिंपल ले जिवो हैला किसी सेंटेंस हम वर्तमान देछि हम ताको फिल अप करबा आसो fill in the blanks using the correct form of words present perfect first कोन सब्जेक्ट रहिबो तापर हैज और हैव रहिबो तापर v3 रहिबो हला फर्स्ट लिखा है आंसर लिखिबो seeing becoming an animal doctor dr dolittle 1 dash to communicate dr dolittle has learned एरी आंसर तो लिखा देखि परथबो has learned has learned to communicate with all animals and birds. He has treated he पर has बसिबो treated हे जीवो countless farm animals and pets with care. The parrot Polynesia has taught him bird language and he has written books about his adventure. Many people have brought their sick animals to this door. Over the years, Dolittle has become renowned worldwide for his unique abilities. खाली सब भर्ब दे देछि से भर्बटा को सेंटेंस पाखर को भर्ब बसिबो आ तारो मेन भर्बटा को v3 रे लिखिबो त देला we will listen to the announcement as you listen state whether the statement is true or false एटा उटे देछि उटे पैराग्राफ देछि तापर तालो क्वेश्चन देछि देखो तार आंसर एटी अछि तमे दरकार थिबो तमे एटी लिखि परिबो तो से लेट अस स्पीक गुड़ाक किसी कर तुम आसो नोटिस रईटिंग एग्जाम आसो है नोटिस रईटिंग टाक भल भाव प्राक्ट करको गोटे नोटिस तुम एग्जाम ही आसो आशा करी भिडियो तुमको भल लगी जब भल लगे तेज मत कमेंट मध्यम निहत जनइबे है मन दे पढ़ापढ़ी कर रही जय जगन्नाथ।